Hello guys, welcome to Vikrant Tech, and today we have the new miner and the model number is S19j XP. This is a 151 terahash machine which works on SHA-256 algorithm, and it can mine Bitcoin, Bitcoin Cash and all other relevant cryptocurrency which works on SHA-256 algorithm. So guys, as you can see, this is the front profile of the miner. On the front side we have two fans, and this is the power supply fans, and this is the power supply socket we have here. So on the front side we have the LAN port, SD card, IP report button, reset button, fault light and normal light. Guys, as you can see, this is the left profile of the miner. So guys, the power supply which is installed on this machine is APW171215A version 1.32. This is the back profile of the miner. These are the two back fans which will throw the hot air out. This is the right profile of the miner where the power supply is being installed on the machine. So guys, let's do the cable setup on this machine. This machine works on single phase current and need 220 volt in order to run. The power consumption for this machine is 3400 watt. Guys, as you can see, this is the power cable which are required to run this miner. This is the power supply interface and this is the interface for the power cord. Guys, as you can see, the cable is connected on the machine, the power cord. The other end of this cable is directly connected in my MCB. This is a 63 ampere MCB. I can run 3 machines with this MCB. So here I have connected the LAN cable. Now let's boot the machine and let's go to the computer screen and find the IP of the miner. In order to find the IP of the miner, we will need Fing app in your mobile phone, or either on the desktop we can use advanced IP scanner in order to find the IP and configure the miner on the desired pool. So from here on, you will need your BTC wallet address. You need to create an account on the pool and you need to find the IP of the miner. So guys, I have already created an account on F2 pool, and I will configure the miner on F2 pool and I'll show you how to configure it. So now let's boot the miner. So guys, let's go to the computer screen and find the IP of the miner. So guys, you can use this software by the name of Advanced IP Scanner in order to find the IP of the miner. Or guys, you can use this tool from BTC tool version 1.3.3 in order to find the IP and configure the miner on the desired pool. So guys, this is the interface for the S19j XP 151 terahash machine, and from here on we need to go to the settings and we need to configure the miner on the pool. Guys, you can use this website by the name of f2pool.com. You can sign up here and you can create your account. I have already created an account, so these are the mining URL we have, and this is my sub account name on F2 pool, Vikrant Tech. I have already configured the miner on the desired pool. Now we have to wait for around 5 to 7 minutes in order to see the hash rate and the complete data updated on the dashboard of the machine. So let's wait for the hash rate, and once the hash rate is here, I will explain you the dashboard one by one. So guys, if you want to purchase any miner, you can contact us and you can visit our website vikrantech.com or .in, and you can click on contact us and you can submit your information here and we will try to get back to you as soon as possible. Guys, you can purchase all mining machine accessories and crypto hardware wallets like Tangem and other spare parts for the mining machines like fans, power supply and cables. All the things are available. Guys, as you can see, some of the data is being updated here on the dashboard of the machine. So there are 3 hashboards in this machine. Each hashboard consists of 110 ASIC chips and the frequency is automatically adjusted by the control board of the machine. So here are the inlet temperature and the outlet temperature of the machine. Outlet temperature of this machine should not go above 85 in long run. So all the 3 chips are working normal here. Normal. So as you can see here, all the chips are working normal. On the bottom side, the fan speed is automatically adjusted by the control board of the machine. So guys, as you can see, after 7 minutes, the data is being updated here on the miner dashboard. So the average hash rate which we are getting on this machine is 155 terahash. The real-time hash rate is normal, network status is normal, fan speed is normal, and the miner temperature is normal. Miner is connected with all 3 ports which we have configured here, and all 3 are normal. All 3 hashboards are working perfectly fine. So guys, this is S19j XP 151 terahash miner for you, giving an average hash rate of 156 terahash. So guys, this miner is currently generating around $10 per day.
This is the total revenue. However, the profits will be adjusted after paying the electricity cost, and the profits of the machine keeps varying as per the BTC price and other relevant factors. So guys, यहाँ से हम हिंदी वर्जन इसका क्रिएट कर रहे हैं। आपको यदि हिंदी में रिव्यू चाहिए इस मशीन का तो लोग यहाँ से हिंदी वाले देख सकते हैं। सो गाइज़, वेलकम टू विक्रांत टेक। और ये एंटमाइनर S19j XP है। हमारे पास ये नया मॉडल आया है। 151 टेराहैश की ये मशीन है जो SHA-256 एल्गोरिदम पे चलती है। बिटकॉइन कैश और जो SHA-256 पे चलने वाली क्रिप्टो करेंसी है उनको माइन करती है। ये जो माइनर है ये 3400 वाट का पावर कंजम्पशन करता है। ये माइनर की हमारे लेफ़्ट प्रोफाइल है और ये हमारे वर्जन और स्पेसिफिकेशंस इसके लिखे हुए हैं, मैन्युफैक्चरर डिटेल्स। ये हमारी यहाँ पे डिटेल्स, बाकी की पीछे जो है फ्रंट बैक साइड के फ़ैन है। और ये हमारी पावर सप्लाई इंस्टॉल हो रखी है। पावर सप्लाई का जो वर्जन है APW 171215A वर्जन 1.32, ये पावर सप्लाई इंस्टॉल है इस मशीन के अंदर। और ये जो है हमारी लैन केबल हमने इस पर कनेक्ट की हुई है और ये जो है हमारी पावर केबल जो है हमने इसमें कनेक्ट की हुई है। ये पावर सप्लाई के हमारे 3 फ़ैन है। गर्म हवा जो है रूम से डायरेक्टली बाहर जानी चाहिए माइनर की। जो इससे छोटे वर्जन आते हैं वो S19 90 टेराहैश के आते हैं और S19K Pro 120 टेराहैश के आते हैं। और जो है आपके इससे जो ऊपर के वर्जन आते हैं बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए वो S21 200 टेराहैश और उससे भी ऊपर की मशीनें आती हैं। तो गाइज़, ये एक मिडल में काफ़ी अच्छा नया मॉडल उभर के आ रहा है। अभी काफ़ी अच्छी प्राइसिंग मिल जाएगी यदि आप विक्रांत टेक में इसका ऑर्डर प्लेस करते हो। सो गाइज़, माइनिंग मशीन लेने के बाद आपको जो है लैन केबल एक परचेज़ करनी रहेगी। माइनर की केबल हम उसके साथ आपको प्रोवाइड करवाएंगे और इसके बाद आपको जो है एक पूल पे अकाउंट आपका हम क्रिएट करवाएंगे। पूरा आपको सेटअप करके देंगे माइनर। अब इसकी जो है ये केबल सेटअप यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुका है। अब माइनर की आईपी फाइंड करने के लिए हम एडवांस आईपी स्कैनर सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं डेस्कटॉप पे, या फिर मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो फिंग वाली ऐप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। फिंग नेटवर्क टूल प्ले स्टोर से आप जो है उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में आईपी पता करने के लिए। जैसे ही आईपी आपकी पता हो जाएगी माइनर की, तो यूज़र नेम जो है पासवर्ड रहता है, रूट रहता है एंटमाइनर वाली मशीनों के लिए, जिससे आप डैशबोर्ड पेज पे पहुंच सकते हो मशीन के। इस मशीन को मैं पिछले अभी 5-6 मिनट चला चुका हूं और इसकी मैं परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूं। सो गाइस, ये जैसे कि आप देख सकते हो ये डैशबोर्ड पेज है माइनर का S19j XP, जहां पे माइनर जो है हैश रेट दे रहा है 152 टेराहैश के आसपास एवरेज हैश रेट। फैन स्पीड नॉर्मल है, माइनर टेम्परेचर नॉर्मल है और नेटवर्क स्टेटस भी नॉर्मल है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। माइनर हमारे यहाँ पे हमने F2 पूल पे कनेक्ट किया हुआ है। F2 पूल पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ये F2 पूल की वेबसाइट है f2pool.com। तो गाइज़, यहाँ पे जो है मेरा सब अकाउंट नेम विक्रांत टेक है और ये जो माइनर है हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है आपके F2 पूल के ऊपर। तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी चल रही है। यदि आपको इसका ऑर्डर प्लेस करना है तो vikranttek.in पे या vikranttek.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके अपनी डिटेल्स डाल सकते हो और ऑर्डर आपका जो है हम प्रोसेस करवा के आपके घर पे माइनर टेस्ट करके कॉन्फ़िगर करके डिस्पैच करवाएंगे। आपको डिस्पैच करने से पहले उसकी टेस्टिंग वीडियो भी देंगे। आप जैसे कि देख सकते हो इसके ऊपर इस माइनर के अंदर जो है हमारे 3 हैशबोर्ड दिए हुए हैं, 1 2 3। तीनों हैशबोर्ड पर जो है 110 ASIC चिप लगी हुई है। फ्रीक्वेंसी जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है कंट्रोल बोर्ड से मशीन की। और जो फ़ैन होते हैं नीचे हमारे ये 4 फ़ैन दिए हुए हैं, ये 4 फ़ैनों की स्पीड भी जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है। ये हमारे जो है माइनर के इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर दिए हुए हैं जो कि नॉर्मल है। लॉन्ग रन में जो हमारा आउटलेट टेम्परेचर है वो 85 से नीचे रहना चाहिए हमेशा, यदि हमें अपनी मशीन को सही सलामत रखना है। तो महीने में हमें जो है मशीन की एक बार क्लीनिंग करनी चाहिए आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल से और डस्ट क्लीनिंग करनी चाहिए प्रॉपरली, ताकि आपकी मशीन जो है लंबे टाइम तक चल सके। तो गाइज़, इसमें जो आप इन्वेस्ट करोगे तो लगभग ये मशीन जो है अभी $10 पर डे के आसपास जनरेट कर रही है। लगभग 900 रुपये के आसपास जनरेट कर रही है ये टोटल जो जनरेशन है इसका पर डे का। तो गाइज़, इसका काफ़ी अच्छा प्राइस है। यदि विक्रांत टेक में आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो आप कर सकते हो। हम आपकी सारी मशीनें टेस्ट करके कॉन्फ़िगर करके उनको जो है आपके एड्रेस पर डिस्पैच करेंगे। आपको सारा इलेक्ट्रिसिटी का ब्लूप्रिंट और सब कुछ चीज़ें देंगे। ये सब मशीन्स जो है हमारे यहाँ से कॉन्फ़िगर होके जो है डिस्पैच होंगी। जैसे कि यहाँ पे भी कुछ वॉट्स माइनर की भी मशीनें रखी हुई हैं और ये डिस्पैच होने जा रही हैं। गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। यदि आपको माइनिंग मशीन के लिए कोई स्पेयर पार्ट्स या हार्डवेयर वॉलेट चाहिए लॉन्ग टर्म अपने क्रिप्टो एसेट्स को सेफ रखने के लिए, तो आप हमारे से परचेज़ कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।